Yes, students, we are going to discuss chapter 22 of civics, democracy, representative institutions. Okay, we are talking normally बच्चे कि before independence, okay, what was happening in India? There were many kings and there were many kingdoms. Okay, there were no chief minister, no prime minister. Okay, we have to follow the rules and regulations that were set up by the kings. Okay, but now what is happening? We are having prime minister, we are having president. Okay, so this is democracy, right? Like before independence, if one king is having one area, okay, if we are taking an example, like I am saying that there was a king of Punjab, Maharaja Ranjit Singh. Okay, so Maharaja Ranjit Singh used to do what? He used to win one area, okay, and then move forward to the other area. Okay, and then like this, every king wants to have his kingdom on whole of the India. Okay, हर एक किंग की चाहता सीगा कि सारी ਜਿਹੜਾ इंडिया आ ਉਹਦੇ अंडर आ जाए. ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस की होया, ਆਪਾਂ इंडिपेंडेंट हो गए. ठीक है, हर एक ਜਿਹੜੀ पावर है वो पीपल के हथ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई. ठीक है, what is the meaning of democracy is? Democracy is a government of the people, by the people and for the people. Okay, means एक तरह ਦਾ people ही शासन कर रहे ने, राज कर रहे ने. Okay, so now the king is, who is the king? People are the king. Okay, so now, but now what is happening in India? India is a democratic country. Democratic means people are ruling. Okay, now how people are ruling? If we are having a country where the population is in crores, okay, so we can't say that all the crore people would be king. Okay, this is not possible. So what will happen? We are choosing our representatives. Okay, take the example like in our school we are having monitors, okay, or class leaders. Okay, they are doing what? They are having the information of whole of the class. Okay, they are representing the class. So same as that, all the people do what? There are elections held in India and the people choose their representatives. Okay, representative of an area. Okay, for example, we are living in an area and in that area I am choosing, we all people are having elections and we are choosing a person who will stand by for us. Okay, जो ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, that person ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਉਂਸਲਰ. ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ. ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ chosen by the people, that he is the chief minister of Punjab. Okay, then ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी डायरैक्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ठीक है, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ. ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ decisions नहीं ले सकता. We are having our representatives who will take decision for us. Okay, जो कि rules regulations बनाएंगे. ठीक है जी. Now there is an election commission in India. Election commission. Okay, so this is an important question. The election commissioner of India is selected by the president of India. Okay, you have to underline this line. Okay, ਹੁਣ election commission ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? इलैक्शन कमीशन का काम है इलैक्शनस कंडक्ट करवाना. ठीक है, और रिप्रजेंटेटिव्स ਨੂੰ चूज करना. क्लियर? नाउ 3 लैवल से इलैक्शन कमीशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ इलैक्शनस करवाती है. ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 लैवल्स ने? फर्स्ट इज लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस दैट हैव डिस्कस्ड बिफोर, दैट व्हेन वी चूज आवर काउंसलर. ओके, वी आर चूजिंग द काउंसलर, दैट इज द रिप्रजेंटेटिव ऑफ एन एरिया. ओके, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ. ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ. ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਟੇਟਸ ਨੇ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ
center. Okay, the prime minister, that is the head of center, you can say. Okay, so ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ. ਓਕੇ, ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਫॉर ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਫॉर state assemblies and for the parliament. Okay, clear with this? Now I'm discussing one more small topic, that is universal adult suffrage. The meaning of universal is basically that is some rule that is applying universally, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, not in India. ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि इंडिया च अप्लाई हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की यूनीवर्सली जी चीज़ अप्लाई होंगी है. यूनीवर्सल, क्लियर विद द मीनिंग. एडल्ट, एडल्ट इज द पर्सन हु हैज़ अटेन्ड एन एज ऑफ 18 और मोर. ठीक है, जोड़ा भी पर्सन 18 ईयर क्रॉस कर लेंदा है उन्होंने आप कहने एडल्ट. ओके, सो यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनीवर्सल एडल्ट सफरेज का की मतलब है दैट एवरी पर्सन हु हैज़ completed an age of 18 has a right to vote. Okay, in India या फिर यूनीवर्सली ये राइट है कि 18 की एज कंप्लीट तो करन तो बाद यू हैव अ राइट कि तुसी अपने रिप्रेजेंटेटिव ने चूज़ करन लई वोट कर सकते हो. ठीक है, नाउ द रूल इज़ अप्लाइंग यूनीवर्सली एंड द रूल जेड़े रूल दे विच की हैगा आ दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स. ओके, लाइक अगर मेल है या फीमेल है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू वोट. ओके, चाहे तुसी एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे तुसी किसी भी कास्ट में बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट. ओके, चाहे तुहाडा रिलीजन कोई भी है, यू हैव द राइट टू वोट अगर तुसी 18 की एज कंप्लीट कर चुके. ओके, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ओके, क्लियर विद दिस नाउ. एंड देर इज़ वन मैन एंड वन वोट. ओके, हर एक पर्सन को सिर्फ एक बारी ही वोट कर सकता है. ठीक है, अगर आप कहिए जिमें अपने आधार कार्ड चेक होंगे ने, आधार कार्ड इज़ वॉट, दैट इज़ योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, यू कैन से, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तुहानू मिलिया होया कि तुसी इंडिया के सिटीजन हो, तो हर एक आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आप एक बारी ही वोट कर सकते हैं. कोई भी एक पर्सन 2 बारी वोट नहीं कर सकता. ठीक है, एंड वन थिंग मोर, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨल्स ने या फिर ਜਿਹੜੇ पर्सन मैंटली रिटार्डेड ने, ਜਿਹੜੇ मैंटली डिसीजन नहीं ले सकते अपने रिप्रेजेंटेटिव ਨੂੰ चूज़ करन दा, they are having no right to vote. Okay, universal adult suffrage is not applying on them. Okay, clear with this?